हेलो, आवाज नहीं आ रही। खुली है। ऐसे बजट है मेरा कुछ पेपर नहीं नहीं पता अंडर आर्मर की जूते खरीदने पड़े अंडर आर्मर ब्रांड है अभी अभी ऊपर चल रहा है ना तो ग्रे कलर डॉक्टर पीपी जैन सर एवं उपस्थित सभी स्कॉलर्स एंड टेक्नीशियंस मैं सभी का विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसी चरणों में हमारे बीच ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित होंगे कार्यशाला की जो टीम है टाइटल है एकेडमिक राइटिंग
रिसर्च एथिक्स इन IPR। इस विषय पर गहनता से विचार प्रस्तुत करेंगे। अब खुला सर। हाँ सर, आप देख लीजिए। नहीं, आपका आप लिखा हुआ है जी जी। ओके, तो 5 मिनट कंटिन्यू कर लेना, थोड़ा टाइम लगाएगा उनके प्रेजेंटेशन में, हालांकि जरूरी है। तो सर कुछ ही टाइम में हमारे सामने लेक्चर प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले हमने कल भी, जैसे जो कार्यशाला के समन्वयक महोदय हैं, उन्होंने इसका उद्देश्य बताया। उसके उद्देश्य में एक चीज और मैं थोड़ी 2 मिनट की कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाहूँगा कि हम रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च में आप स्कॉलर, साथ में आपके गाइड हैं, दोनों का कैसे सह संबंध होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की कैसे हेल्प करना चाहिए, वो कहानी के माध्यम से थोड़ा सा देख सकते हैं कि देयर वर 2 फ्रेंड्स, वो जा रहे थे रास्ते में, एक बड़ा सा पत्थर डला था रास्ते में और उनको गाड़ी निकालनी थी। दोनों दोस्त उतरे और एक ने दूसरे से कहा कि ये पत्थर हटाओ रास्ते से। तो दोस्त ने जोर लगाया, पत्थर नहीं उठा। तो जो दूसरा दोस्त इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसने कहा यूज योर कंप्लीट पावर, यूज योर फुल पोटेंशियल। उसने फिर जोर लगाया, पत्थर नहीं हटा। उसने फिर से कहा यूज योर फुल पोटेंशियल। उसने फिर से जोर लगाया, पत्थर जिसका तस रहा। खड़ा हो गया वो हार के कि मुझसे नहीं उठ रहा है, मैंने पूरी कोशिश कर ली, पूरा पावर लगा दिया अपना। तब जो दोस्त इंस्ट्रक्ट कर रहा था, फिर उसने कहा कि while I instructed you to use your complete and full potential, you did not use your complete potential, you use only your own potential। आपने अभी सिर्फ स्वयं का पावर यूज किया है, खुद का, सिर्फ खुद का यूज किया है। मैं भी तो आपका पावर हूं, क्योंकि मैं भी आपका सहयोगी हूं। I am also included in the term your potential। So is the case with in this process the 5-year-long journey, maximum 6-year-long journey, कि here you and your supervisor
Both of you are strength and power to each other. If any one of you think that I only will be able to complete the things on my own, I think it might be a little bit difficult. तो गाइड और स्कॉलर दोनों एक दूसरे की हेल्प लें, तभी विकास होगा, या आगे जा पाएंगे या किसी टॉपिक के कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। जैसे सर ने भी कल बताया था कि टॉपिक सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, या तो गाइड अपना टॉपिक देने के लिए सिर्फ वो बोल रहे हैं कि मेरे टॉपिक पे करिए, या स्कॉलर टॉपिक लिए कर रहे हैं कि मैं इसी टॉपिक पे करूंगा। तो थोड़ा सा दोनों लोगों को चलना पड़ेगा, थोड़ा आप चलें थोड़ा वो चलें, तो दूरियां कम होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक जन चलते हैं पूरा 100%, तो एक जन के लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे आपस में, तब चीजें कहीं मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो हमारे सामने उपस्थित हैं मैनिट भोपाल से डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव सर। उद्घाटन सत्र के औपचारिक शुरुआत में मैं कार्यशाला के समन्वयक महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर पीके जैन सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सर प्लीज। साथ ही में पुनः एक बार फिर से हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव सर का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सर से अनुरोध करता हूं कि सर हम सबको अपने लेक्चर के माध्यम से लाभान्वित करें। वैसे मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाइए सर, तो उसका दो अकाउंट से कनेक्ट हो जाएंगे सर, बस मोबाइल से कनेक्ट कर लें, इसमें उनका चेहरा नहीं दिखेगा। इसमें कर लो। हम बैठे हैं, यहाँ बैठने के लिए बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। ये नहीं जाऊंगा। उसको ऐड करना इससे भी। Hello, can you hear me? Yes sir. Okay, so good afternoon to everyone. Sir, could you please? Good afternoon to everyone. First, I would like to thank VC ma'am, who has given the opportunity to deliver a lecture on this topic under the faculty development program. And second, Dr. Rahul, who has invited me for this lecture. So I think this is the faculty development program. Faculty development program, so mostly faculty is listening this program and some of the researcher, but this is useful for everyone who is going to be researched, who is working on this on the research and different area. This is a research ethics and IPR. If I will tell you about this research ethics and IPR, these things are available. These things are useful for
everyone in every sector or in every branch. So because when we are writing the book, when you are publishing the result, when you are going for the other things, the ethics, academic ethics are important for us. So this topic is very important for the each and every field. Sorry, because I'm my camera is not working, so I can't see you, even though you can't see me. Okay? But you can listen me because in the first half I am very busy about that some meeting and all, so unable to check my camera and other things. So this is the first. Can you tell me about the what is the research, invention, and all? This is the outline of the research, ethics, and academic writing. Academic writing is not different from this IPR than this research ethics. These are correlated. It's correlated. So first is what is the research? It is not like research means only the science research, only the this type of research. Everyone who is in different field, different area, who is searching something, doing something in the field of their area, is called research. So in our outline of this presentation is the introduction, research ethics, introduction to IPR. So under the IPR, patent, trademark, copyright. Hello, sir. Sorry? Sir Shrivastav, sir. Yes. Hello, sir. Please use bilingual conversation, as there are some research scholars and PG students also in this Workshop-cum-FDP, so they can also get properly used, sir. Sorry. Your presentation is immense important and nice, sir. Sir, it is a request from my side that you can use bilingual, sir. By use? Bilingual, दोनों भाषाओं में. अच्छा, okay, no problem, no issue. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. So research ethics, patent, trademark, copyright, geographical indications, utility model, design, ethical consideration in IPR, what is the patentable invention, what is non-patentable invention, IPR issue, and few glimpses of our research area. So research, just what is the meaning of the research? So research means is a systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information or interpreting the information. You can see the data to increase our understanding of topic or issue. Like research में आप क्या करते हो कि in research whatever topics, what is the problem we are giving you are collecting the data. Social science person, they will give you to you go and survey, ask the questionnaire, है ना, इस टाइप से आप questionnaire prepare करके आप ले जाते हो. Then after the collection of the data, you are analyzing. Analyze कैसे करते हैं? Through systematic analysis means through the your different statistical formula, and after the statistical formula you are interpreting. You are interpret करते हो आप लोग information को और उसके relevant उस topic से relevant issues को आप understand करते हैं. So this is called the research. So how will formulate the research question? Research questions को formulate कैसे करते हैं? So this is first we have to just see what is the research project in your mind, research problem in your mind. पहले अपने दिमाग में आता है कि कौन से एरिया में रिसर्च क्या करना चाहिए. That should be our target, should be clear. और this you focus on this research question. Research question कुछ formula आपने कुछ draw करना है, कुछ नए
फॉर्मूला का इन्वेंशन करना है, कुछ नई ड्रग्स को बनाना है, तो वो आपका टारगेट होगा। ऐसा नहीं होगा आपको ड्रग्स बनाना है तो ड्रग्स में कौन सी ड्रग्स को बनाना है, किस टाइप की ड्रग्स को बनाना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। देन आफ्टर दैट यू आर व्हाट यू आर डूइंग, वी आर गोइंग फॉर द review of literature. So review of literature is very important. A literature review involves surveying existing research on a topic to identify the gaps, establish context, and avoid duplication. Review of literature में आपके your supervisor is suggesting you go for the survey in that literature survey. Then you are searching. आप सर्च करते हो डिफरेंट वे में, आइदर सॉफ्ट कॉपी, अब तो आपके पास सब्सक्रिप्शन है बहुत से जर्नल का, उससे, देन बुक्स की हेल्प से, वो जिस प्रॉब्लम्स को आपने हाईलाइट करना, जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते, उसके बारे में स्टडी करने को बोला जाता है। दैट्स व्हाई बिफोर द आरटीसी आपको 1 ईयर या 6 मंथ या 2 इयर्स, इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट, वो आपको टाइम दिया जाता है। यू जस्ट गो फॉर द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो इन दैट रिव्यू ऑफ लिटरेचर व्हाट यू आर डूइंग टू आइडेंटिफाई द गैप्स। आप गैप्स को आइडेंटिफाई करते हो, मींस किसी ने काम किया है एक सर्टेन लेवल तक, बट व्हाट आर द गैप जो उन्होंने नहीं किया है, एंड हाउ विल फिलफिल दिस गैप्स। दिस इज our target of the literature review, and establish the context and avoid duplicate. ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे पर्सन ने, किसी दूसरे साइंटिस्ट ने उसको कर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। So that's why we are conducting the literature review, which is very important. It helps in refining the research question and shape the study framework. So literature review of literature is very important to avoid the duplication, identify the gaps. Then after the literature review of literature, आपको identify of gaps करने के बाद, then again you are going for the literature review to see the proper or right methodology. What are the methodology? So as per the your after that identifying the gaps, you are choosing their methods or objective. So selecting appropriate research method, like maybe qualitative, quantitative or mixed method, is important for the gathering the data. आप जो methodology choose करते हैं, either it can be qualitative, quantitative or mixed, both the way. Scientific, the student who is working in the science, they know about the qualitative, quantitative. Even the social science person, they also know the what is the qualitative and quantitative mixed method. उसमें आप methodology को किस methods को adopt करना है, you are selecting. How you are selecting? Again through the review of literature. Then you are optimizing this method to gather the data. So the choice of methodology is affects how the data is collected, how you analyze and interpret it. The methodology आपकी affect करेगी कि किस method से आपने data को collect किया है, analyze किया है and interpret किया है. So उसके हिसाब से आपको methods की choice of method, there is a lots of choice of method, okay, but that method we have to choose which is relevant for our data, for our problems, and which we can do in our labs. Second, data collection and analysis. After the method of performing the experiment, what we are doing, collecting the data. आप experiment को करने के बाद पहले आपने objective fix किया, रिसर्च लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब लिटरेचर रिव्यू किया, उससे गैप आइडेंटिफाई किया. आफ्टर द आइडेंटिफाई द गैप्स, व्हाट यू डन, प्रपोज मेथोडोलॉजी आपने सर्च की. आफ्टर दैट यू डिड योर एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट के बाद क्या जनरेट होता है, डेटा. देन यू आर कलेक्टिंग द डेटा. ओके,
So the effective data collection techniques such as survey, सोशल साइंस वाले सर्वे करते, इंटरव्यूज बाय इंटरव्यूज और एक्सपेरिमेंट, इसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड एंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग। इसके बेस पे हम रिसर्च फाइंडिंग की रिलायबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं कि जहां, क्योंकि एक्चुअल में हमें चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप, बिकॉज दैट्स व्हाई एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कहीं से आप सर्वे करके आपने किसी डिपार्टमेंट से लाके सर्वे को करके आपने डेटा कलेक्ट कर दिया, बट उसका वो माइंडसेट नहीं रहेगा जो प्रॉब्लम आप सोचना चाहते हो। और इंटरव्यू परफॉर्म करते हैं आप लोग, देन साइंस स्टूडेंट दे आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, वो आपके जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूफ करने के लिए, उसको स्टैब्लिश करने के लिए एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं और मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं, ओके, और उससे अपनी रिलायबिलिटी, रिसर्च फाइंडिंग की रिलायबिलिटी चेक करते हैं। सो एनालाइजिंग दिस डेटा यूजिंग सुटेबल टूल्स एंड मेथड्स हेल्प इन deriving meaningful outcomes. After the data collection, what we are doing? Analyzing. Analysis is very important. Data को आप analyze करते हो, कैसे analyze करते हो? By using the tools. Nowadays, lots of software tools are available. Software tools हैं, और other way, पहले हम लोग another way में statistical tools by hands हम लोग करते थे, ताकि उस method और tools के through एक meaningful outcomes निकले, which will be useful for the society, which will be useful for the society. So these are the process of the research. First is the research gap, literature survey के बाद research gap, then the you will come, the your result will come, interpretation of the result, जिसके basis में outcome निकलता है. Next, ethics and integrity in research. Sorry. So maintaining ethical standards, including obtaining informed consent and ensuring confidentiality, is vital for credible research. Like ethics में और integrity is very important. These are the ethical standard, okay, like confidentiality, consent. मेडिकल डेटा में आप क्या करते हैं? कंसेंट ऑफ द पेशेंट, उसके कुछ आपको ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करना है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं कि ये पेशेंट का हम जो सैंपल ले रहे हैं उसके आइडेंटिटी को हम इंश्योर करें, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे, which is very important for this research. And second is the plagiarism, which is very broader, you can say the problem these days. So but most of the universities or institutes, they are nowadays, what they are saying, you incorporate the plagiarism report. Plagiarism, what is the plagiarism? क्या ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे लिटरेचर से लेके उसको कट एंड पेस्ट करके आपने अपना डेटा या आपने थीसिस बनाई हो, है ना? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस आउटकम और वैलिडिटी के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन व्हाट इज द एकेडमिक राइटिंग? Academic writing is nothing. This is a mixture of all these things, ethics and IPR issue. So we should know about the ethics. What are the ethics? जैसे आपने कहीं पेपर पब्लिश करते हैं, कहीं पे आप थीसिस लिखते हैं और डिसर्टेशन लिखते हैं. So what we are doing? आपको लिटरेचर रिव्यू के बाद आपको राइटिंग करने के लिए दिया जाता है. ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कहीं से ला के उसको कट एंड पेस्ट करके जोड़ दें, which is not a, it is called the, it is non-ethical. Okay, so here is a lots of means a punishment for the academician. Okay, like retraction of the paper वापस ले लिया जाता है. There is a lots of, will not talk about that. So what is the academic writing or features of the academic writing? First,
it should be precise, it should be balanced, objective should be clear, it should be formal, structured, evidenced, critical. So these are the features of the academic writing. So writing which communicate our ideas, information and research to the wider academic community or fraternity. हम जो भी इंफॉर्मेशन है, जो रिसर्च आउटकम्स निकले, उसको हम प्रॉपर मैनर में ये सब पॉइंट्स जो होते हैं उसको देखते हुए हम पब्लिश करते हैं. ओके, सो इसमें दिस टाइप ऑफ thinking, this type of characteristic should be involved. Like citation is proper. If you given the citation, आपने जहां से कोट किया है उसको प्रॉपर साइट किया है कि नहीं, उसको बिब्लियोग्राफी में इंक्लूड किया है कि नहीं, टेक्स्ट में इंक्लूड किया नहीं. इफ आपने कहीं से फिगर लिया है, कहीं से डायग्राम लिया है, तो उसको आपने मेंशन किया है कि नहीं, या उस साइंटिस्ट ऑथर से परमिशन ली है कि नहीं. दीज आर ऑल एकेडमिक एथिक्स और so these are the academic writing, academic ethics, academic part of the academic writing. What is the research ethics? Ethics involve lots of things, like which is ethics means is the moral principle and guidelines which govern the conduct of the research. आपको research ethics कुछ होते हैं जिसको आपको मानने होंगे अपने during your research for the conduction of the research. And why it's matter? First, ensure the credibility and integrity. Credibility means you ensure the credibility, this data is credible or not, integrity is proper or not, okay, and protect the right of participants and researchers. Means आपको उसके participant और researcher जो भी हैं उसके rights को protect करना. ऐसा नहीं है कि किसी का वर्क किया है हमने, दूसरे ने उसको publish किया है और रिसर्चर ने इसको लिया है. प्रमोट सोसाइटल ट्रस्ट इन साइंस. सो सोसाइटी का ट्रस्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट विच प्रमोट द साइंस. सोसाइटल ट्रस्ट मीन्स जो वर्क हम करें ऐसा तो नहीं कि अनएथिकल है. बहुत सी जैसे मेडिकल में फील्ड में देख रहे हैं आप, बहुत सी चीज अनएथिकल हो रही है, बहुत सी रिसर्च में अनएथिकल चीजें हो रही हैं, बहुत सी थीसिस ऐसी बन रही हैं कि दूसरे का डेटा इधर से डेटा लिया, उधर से लिया, स्टैंडर्ड रन किया, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, which is very important. Why it's matter? Otherwise, if you'll go, if your thesis and dissertation is awarded, if you'll go somewhere for the interview, आप इंटरव्यू में कहीं जाएंगे, कहीं पे भी आपका देखा जाएगा, तो the question will arise, lots of question will arise, and definitely you will punish. Punish is not in like of कि आपको हथकड़ी डाल के उसमें जेल में डाल दिया, कि punishment in different way, okay, in academic punishment. Blacklisted, your paper will be blacklisted, your name will be blacklisted, like that. Next, principle of research ethics. First is the integrity, which is already told you, honesty in reporting the data and finding. आप जो डेटा और फाइंडिंग रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमको रिजल्ट ये मिला है, हम उसको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने के लिए, या हम अपने को एक लाइक फॉर एग्जांपल हम केमिकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कोई रीडिंग लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन के लिए ऐसा नहीं कि हम उसकी डाइल्यूशन उसको हम चेंज कर दें, उसके पॉइंट्स को चेंज कर दें, डेटा को हेर फेर करें, है ना. It should not be like this. We should be honest. Whatever the result will come, you just see, and if it's not coming proper, you just repeat one time, twice, thrice, okay, to find the proper data. Respect. Respect means acknowledge and protect human, animal right and welfare. If you are taking some quote
or doing some research in another lab, so it is not like that. Just you pay and take the data and collect your data. You should acknowledge the person. You should acknowledge or respect the person जहां से आपने काम किया है, and उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है. इफ उनका अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, then you can give his or her name in your paper. And for the ह्यूमन एनिमल राइट्स जो है, एनिमल राइट्स हैं जो अभी आएंगे आगे, एंड वेलफेयर, इसके लिए ह्यूमन एंड वेलफेयर के लिए ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज वॉट एवर द वी आर डूइंग इन रिसर्च दैट शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल. थर्ड वन इज a confidentiality. Privacy and maintaining of the confidentiality is very important. Okay, wherever you will take the data, you maintain the privacy because it's very sensitive information. Fourth one is the accountability. Researcher responsibilities towards society and the environment. This is our accountability. Researchers की responsibility होगी कि society के लिए और environment के जो भी हम research कर रहे हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर, इन्वायरमेंट के वेलफेयर के लिए बने, इको फ्रेंडली होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने रिसर्च किया, इन्वायरमेंट डैमेज किया. ओके, और दैट शुड बी फेवर ऑफ द सोसाइटी. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिसर्च एथिक्स: ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्क मिनिमाइजेशन, जस्टिस, बेनिफिकेशंस, respect of person, which are already discussed. Respect for person, we are already told you have to acknowledge the person. Emphasize the importance of obtaining voluntary agreement from participant after fully informing them about the research. Whatever you did, आपने जहां से भी डेटा कलेक्ट किया है उसके थ्रू वॉलंटरी एग्रीमेंट किया है पार्टिसिपेंट से, उनसे मीन्स डेटा लेने के लिए आपने जो भी क्वेश्चनर रेडी किए हैं या कंसेंट लिया है, उससे उनसे एग्रीमेंट में साइन कराए हैं कि नहीं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक्नॉलेजमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस रिस्पेक्ट फॉर पर्सन. बेनिफिशियरी, encourage researchers to maximize the benefits and minimize risk to participants. रिसर्चर में एक साइड आपके बेनिफिट्स हैं, एक साइड रिस्क भी है पार्टिसिपेंट. तो आपको क्या करना है, रिसर्चर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स हो और रिस्क ऑफ पार्टिसिपेंट को मिनिमाइज करना है. ओके, जैसे कुछ भी आप डेटा कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें रिसर्च, क्योंकि बिकॉज रिसर्चर जो रिसर्च कर फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. ओके, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए और रिस्क भी, पार्टिसिपेंट का रिस्क मिनिमाइज होना चाहिए. उनको मीन्स इस टाइप की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, उसके अदर फैक्टर्स हैं उसको आप इनकॉर्पोरेट करेंगे. जस्टिस, advocate for equitable selection and treatment of research participant, ensuring fairness, who bears the risk and who benefits. आपको इसमें जस्टिस करना होगा कि इक्विटेबल सिलेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट मीन्स whatever you did during your research, आपने कई लोगों से आपने हेल्प लिया, देन उनकी हेल्प को आपने मतलब हेल्प लिया, बट आपने ऐसा तो नहीं इसको, अगर फॉर एग्जांपल पेटेंट है, पेटेंट इज अ कमर्शियल, है ना, इफ इट्स कमर्शियलाइज और कॉपीराइट में जैसे आईपीआर में आ गया, आईपीआर में आएगा तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ इक्विटेबल है कि नहीं, आपस में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं, पेपर में जिसने भी आपको कंट्रीब्यूट किया इसका प्रॉपर नेम है कि नहीं. Fourth one is the transparency. In research ethics,
refers to the openness and clarity with which researchers conduct and report their studies. Transparency is also very important. Risk minimization is also already told you, and confidential. These are the already told you before. These are the parameters or characteristic of the research ethics. Ethical issues. Now, it's ethical issues in bioscience. Because I am a faculty of the biological science, biotech, so definitely, because here in the biosciences, lots of ethics are involved. Not only one or two ethics, lots of ethics are involved, like human research. So, for the human research, you take the ensured consent and participant privacy, which already told you. आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसका सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट का, तो उसकी प्राइवेसी मेंटेन करेंगे और उससे कंसेंट लेंगे. फॉर द एनिमल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो दिस ह्यूमन रिसर्च के लिए क्या अपन ह्यूमन एथिक्स कमेटी, वी हैव टू फ्रेम द ह्यूमन रिसर्च ethics committee in our institute level, or whatever, wherever you are taking the sample from the person or patient, you take the prior permission from the human ethics committee from that institute, especially from the medical college or AIMS or other hospitals, etc. Without human ethics committee, you can't take the human sample from the diseased person. Second one is the animal testing. So, adherence to human practice following the 3 R's principle: replacement, reduction, refinement. Animal testing, what we are doing है, animal testing में आप करते हैं human practices के लिए. आगे हम बढ़ने के लिए animal testing करते हैं कि ये चीज इसमें follow होगी कि नहीं. Before the human research के लिए तो अपन ने sample collect किया. Animal testing वो जैसे आपकी अभी वैक्सीन बनी, कोविड की 19 की वैक्सीन बनी, उसके पहले एनिमल टेस्टिंग होती है, एनिमल में टेस्टिंग होती है, तो उसके लिए एनिमल एथिक्स कमेटी फ्रेम करनी होती है अपने इंस्टीट्यूट्स में. दैट एनिमल एथिक्स कमेटी विच इज framed by the institute, and you have to send in the DBT, Department of Biotechnology, Government of India. उसमें नॉमिनेट किया जाता है DBT नॉमिनी, सम वेटनरियन, सम सोशल साइंटिस्ट. सो उनका मीनिंग ये होता है कि आप जो भी रिसर्च करने जा रहे हैं, दैट शुड बी वेलफेयर फॉर द ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए आप एनिमल पे टेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी आपके लिए कर रहे हैं. डेफिनेटली हम टेस्टिंग करेंगे, फिर उसकी ऑटोप्सी करेंगे, डिसेक्शन करेंगे, तो उसके लिए हमें एनिमल टेस्टिंग की जरूरत होती है. बट उसके पहले, ये करने के पहले हमें एनिमल एथिक्स कमेटी से परमिशन लेनी होती है. फॉर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखने के लिए बायोसेफ्टी कमेटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट. In the biosafety committee, what they will see, if there is some concern is related GMOs, genetic modified organism, genetic modified crops, genetic modified things. So for that, or you can say the recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology may you have to take the prior permission from the institute biosafety committee. Then after, data integrity. After whatever you will take this data, collect this data, this type of data, avoid unethical practices like data fabrication or plagiarism, which earlier already told you. Whatever the data will come through the experiment or through the survey, through the questionnaire. Don't fabricate. Okay, whatever the data will come, you just interpret it and publish. Or plagiarism, don't take the text from the other authors, other book or paper, whatever the things, you take the collect the data, but write on your own way. Okay, so before that you have to check the submitting your paper, you have to see the plagiarism check.
Nowadays, lots of plagiarism software is available like Turnitin. Turnitin is a very good software. काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप पेपर डाल के देखते हैं, आपका जो भी पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं तो उसमें कितने परसेंट सिमिलैरिटी है। तो वो जो टर्निटिंग या प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर वो बताता है कि इसमें 10% है, 20% है, 40%, 80% है। देन अगर उसमें टर्निटिंग का और भी सॉफ्टवेयर है, कौन सा एक है? So this one is a software. उसमें जैसे 10 और 20 that will be okay. आपका सिमिलर then it will be okay. अगर आपका 70% हो रहा है, 80% आपने वो डेटा को, वो टेक्स्ट को कंपाइल किया है दूसरे डेटा से, आपने एक प्रकार से टेक्स्ट की चोरी की है। ओके, सो दिस इज फॉर दैट यू हैव टू generate the plagiarism report. Then the ethical review process, already told you, institutional ethics committee to evaluate the research, or already told you human ethics committee, animal ethics committee, biosafety committee, and this will review the proposal to see if there is some potential risk, what are the societal benefits, and it's adhere to ethical guidelines or not. So this is about the ethical guidelines, ethical issues in different field, not only the bioscience but in every field, especially like ethics committees involved. Like if you are taking the data, only the soft data of the patient, then only then also you have to go through the institutional ethics committee. Okay, now I'm coming to introduction to IPR. What is the IPR? I think yesterday you also listen about the IPR. They are the that person is the perfect, how will deal with IPR, how will go for IPR, how we submit the IPR. But I'm introduced about being a scientist, what are the IPR and how will go for the means, because sometimes we don't know this data, this paper, this device is patentable or not. हमें उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। तो intellectual property rights are legal rights which protect the creation of minds such as invention, artistic works and design. तो IPR में है वो आपका it's a legal right of a person which protect the आपके जो आपके माइंड में क्रिएट हुआ है, क्रिएटिव थिंग्स, कुछ इन्वेंशन है, कुछ आर्टिस्टिक वर्क है, डिजाइन्स है, वो सब चीजें इंक्लूड होगी। ओके, सो दिस विल कम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बिकॉज बिफोर 20, 25, 30, 40 years back we don't know about these things. So अपनी नींद भी गई, हल्दी भी गई, because that time after that lots of treaty has been done within the global scenario. Why it matters? Because somebody has taken this, आपने कुछ चीजें बनाया है, कुछ आपका आर्टिस्टिक वर्क है, वो आदमी ने वो चीज को लेकर अपने यहाँ पब्लिश कर लिया है, पेटेंट कर दिया, उसे कमर्शियली प्रोड्यूस कर रहा है और उससे रेवेन्यू और मनी जनरेट कर रहा है। सो दिस इज that's why इस टाइप के रूल्स लाए गए हैं। encourage innovation and safeguard investment in research and development. This time रिसर्च इनोवेशन को काफी इंकरेज किया जा रहा है, उसकी सेफगार्ड इन्वेस्टमेंट के लिए
उसमें जो भी R&D हमने लगाया है पैसा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और जो इनोवेशन को इंकरेज करने के लिए हम रिसर्च में IPR इश्यूज का यूज करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अपने राइट्स पता होने चाहिए और किस टाइप के राइट्स हैं। अगर आपने कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप किया है, कुछ नए जगह में आपने कुछ चीजें मतलब जनरेट हो रही, प्रोड्यूस हो रही हैं, या कुछ बुक्स आपने ली हैं, बुक्स लिखी हैं, तो दिस इज द टाइप्स ऑफ IPR। सो फर्स्ट, व्हाट इज द पेटेंट? यूजली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर पे लोगों को यूजली ये जाता है पेटेंट का ही ध्यान दो, बट intellectual property right can not only the patent, everything will involve, like patent is for the to protect novel inventions like process or products, and trademarks secure branding elements such as logos। trademark आप देखते हैं उसमें लिखा रहता है, ओके आप कहीं पे भी आप खरीदते हैं उसके ऊपर ट्रेडमार्क, टेट्रा पैक, उसमें ट्रेडमार्क्स दिया होता है। कॉपीराइट्स होते हैं, कॉपीराइट्स यूजुअली क्रिएटिव वर्क्स के लिए होता है, जैसे साइंटिफिक बुक्स के लिए, लिटरेचर के लिए है, एंड देन फिल्म में भी होता है, म्यूजिक में होता है, कॉपीराइट्स होते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस फॉर्मूला और मैटर, जैसे सम रेसिपी है, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस मैटर है, फॉर्मूला, उसके ट्रेड सीक्रेट्स होता है। देन जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, दिस लिंक products to specific location, GI टैग जिसको बोलते हैं, वो GI टैग के थ्रू हम उस स्पेसिफिक लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वहां पे प्रोडक्ट हो रहा है, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। लाइक जो दार्जिलिंग टी है वो दार्जिलिंग में हो रही है। देन आप और देख रहे हैं मधुबनी पेंटिंग है, वो वहां पे जनरेट होगा, सॉरी वो उसमें आएगा ट्रेड कॉपीराइट में। देन अदर चीजें हैं जैसे कड़कनाथ, MP में कड़कनाथ जो है वो पर्टिकुलर उस झाबुआ साइड में है, वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो दैट चिकन। सो दीज आर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। बासमती राइस, दिस इज द GI tag। utility model, which provides a protection for incremental improvement to products and process। आपने जो प्रोडक्ट या प्रोसेस पहले से ऑलरेडी है बट उसकी यूटिलिटी में या उसके मॉडल में कुछ इंप्रूव किया, इंक्रीमेंटल इंप्रूव किया, मींस वो आपकी कभी फ्यूल को बचा रहा है, कभी लाइट को सेव कर रहा है, एनर्जी सेव कर रहा है, वो भी इस दायरे में आएगा टाइप्स ऑफ IPR में, क्योंकि किसी ने इन्वेंट किया है बट उसकी आपने एफिशिएंसी इंप्रूव की है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल कम अंडर दिस टाइप ऑफ IPR। These already told you intellectual property rights, patent like telephone, patented by Alexander Graham Bell in 1876. Then trade secret recipe of the KFC, which they are using the 11 herbs and spices in there। 11 प्रकार के हर्ब्स का और मसाले का यूज करते हैं KFC जो रेस्टोरेंट्स हैं। दिस इज कॉल्ड द ट्रेड सीक्रेट। जियोग्राफिकल इंडिकेशन में लाइक मधुबनी पेंटिंग है, मैसूर सिल्क है, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरीज है, दिस विल कम अंडर दिस GI टैग। यूटिलिटी मॉडल एंड डिजाइन में आपने कप नूडल्स है, एप्पल एयरपॉड है, ये सब आपके मॉडल्स हैं जिसको आपने डिजाइन किया, यूटिलिटी मॉडल डिजाइन किया है। पहले ये सब नहीं आता, तो स्पेसिफिक उसके लिए आपने डिजाइन किया पर्पस के लिए। कॉपीराइट है, copyright for the for the different books, like टेलीविजन में स्टार वार्स आते थे, देन पिक्चर्स मूवी के लिए भी कॉपीराइट का यूज होता है। वी आर सेलिंग द कॉपीराइट, वी आर गिविंग द कॉपीराइट, ओके। एंड ट्रेडमार्क्स, दीज आर द ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क आप देख रहे हैं, टाटा का ट्रेडमार्क, बाटा का ट्रेडमार्क, बिस्लेरी का ट्रेडमार्क, महिंद्रा का ट्रेडमार्क। सो दीज आर द trademarks। So now already told you about the patent,
patent again, it's a legal right to the owner, the ability to prevent others from making, using or selling an invention for a set period of time. जिसने वो पर्सन ने उसको सर्च किया है, उसका लीगल राइट है उसको सेल करने में, उसको फैब्रिकेट करने में, यूज करने में, सेल आउट करने में फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे 20 इयर्स का दिया जा रहा है, बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देयर कैन बी पेटेंट अप टू 25 इयर्स. सो इसके लिए द ओनर्स कैन लाइसेंस द इन्वेंशन टू अदर्स ऑन एग्रीड टर्म्स और सेल द राइट टू द इन्वेंशन टू समवन एल्स. इसको वी कैन सेल आउट, अपना जो पेटेंट वी कैन सेल आउट कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अपन दे सकते हैं. उससे आपको कमर्शियल वैल्यू मींस रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. So this is about the patent. What are the patentable invention? A new product or process, already told you, which is useful for the industry. First, it should be meet the following criteria: novelty, inventive steps, industrially applicable. So this should be criteria of the patentable invention, which can be a new product or process. नोवेलिटी, इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए. व्हाट इज नॉट पेटेंटेबल? अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी के अगेंस्ट, लाइक आप अगर पब्लिक हेल्थ एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं और किसी की लाइफ के लिए हार्म है, तो यू कांट पेटेंट. Discoveries of scientific principle or abstract theories, like mere discoveries of natural substances, scientific laws or new forms of known substances that don't enhance efficacy, इसको भी आप पेटेंट नहीं कर सकते. Method of treatment and living organism, ट्रीटमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म की ट्रीटमेंट की मेथड है और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको भी आप पेटेंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड्स को आप पेटेंट नहीं करा सकते. ट्रेडिशनल नॉलेज एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेंशन, इन्वेंशन बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज और दोज हार्मफुल टू नेशनल सिक्योरिटी, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी. सो यू कांट बी पेटेंट दिस टाइप ऑफ आइटम्स. So next is the trademark. Trademark already told you. Trademark is a recognizable symbol, word, phrase or insignia that distinguishes a product or service from others of its kind. इससे आप डिस्टिंग्विश करने के लिए कर रहे हैं. जैसे कोका कोला के लिए ये ट्रेडमार्क है, गूगल का है, ये ओलंपिक का है. लाइक दिस, these are the trademark. Okay, so these are the trademark which registered trademark is valid for 10 years from the filing date, but it can be renewed indefinitely. इसको हम फर्स्ट 10 years के लिए वैलिड होता है, then it can be indefinitely renewed करा सकते हैं. Copyright. A copyright is a type of intellectual property that gives its owner the exclusive legal right to copy, distribute, adopt, display, and perform a creative work, usually for a limited time. कॉपीराइट के अंडर में आप जनरली बुक्स है, ऑलरेडी टोल्ड यू बुक्स है. बुक्स को हम कभी कभी डायरेक्ट हम बुक्स नहीं, उसको हम कॉपीराइट देते हैं अपने पब्लिशर्स को. देन दे आर सेलिंग दैट बुक, कॉपीराइट में साइन कराते हैं. आपने देखा होगा रिसर्च पेपर में भी आप कॉपीराइट में साइन कराते हैं उन लोग, और बुक्स में भी साइन कराते हैं. बिकॉज दे आर पब्लिशिंग, दे आर सेलिंग योर प्रोडक्ट, एंड वॉट एवर इनकम दे आर जनरेटिंग, जो भी इनकम जनरेट हुआ उसको दे आर गिविंग टू ऑथर्स. एक सर्टेन एग्रीमेंट होता है, कितने परसेंट देंगे, कितने परसेंट अपने पास रखेंगे. इस कॉपीराइट. So copyright is intended to protect the original expression of an idea in the form of creative work, but not the idea itself. Usually creative work के फॉर्म में copyrights होते हैं, like film, television and film music. इस केस में भी copyright दिया जाता है. GI tag already told you, a distinctive sign that identify a product origin and quality. वो कहाँ से
ओरिजिनेटेड है, उसकी क्वालिटी डेफिनेट जहां से ओरिजिनेटेड, जैसे बासमती को हम लोग कहाँ से ओरिजिनेटेड मानते थे, देहरादून एरिया, दैट एरिया। नाउ अब जो आपको बासमती मिल रहा है सब जगह मिल रहा है, बट क्वालिटी वाइज अपन देखते हैं देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज। सो बासमती प्रीवियसली इट वाज ओनली दैट इन देहरादून एरिया, देहरादूनी चावल भी बोलते थे पहले। सो दीज आर द GI टैग। GI protect producer from competitor who try to exploit their reputation and know-how. They also give consumers a guarantee of authenticity, quality and distinctiveness. इससे ये पता चल गया, कभी पहले ये सब एक्सप्लॉयटेशन होता था कि वहां से लाकर अपने यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको फिर बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं उस नेम से कि वहां का है प्रोडक्ट है, एंड वो पूरा बेनिफिट ले रहे हैं। बट नाउअडेज GI टैग आने से इसमें कंज्यूमर को गारंटी मिलती है कि वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक है कि नहीं, दैट इज क्वालिटी है कि नहीं, और हाउ इट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रीवियस वन। ओके, सो GI टैग। यूटिलिटी मॉडल, a utility model is a registered IPR that gives the owner exclusive use of a technical invention for a limited time. Utility models are often used to protect invention that make a small improvement to existing product and have a short commercial life. जो existing product है उसमें ही small improvement करके हम उसको लिए एक उसको commercialize कर सकते हैं। This will come under this utility model or design. Now the ethical consideration in IPR: access versus innovation. Access ensure that protected invention remain accessible, especially in healthcare. वो एक्सेसिबल ऐसा नहीं कि हम प्रोटेक्ट करके अपने पास इन्वेंशन को रख लिया पेटेंट, दैट शुड बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। यूजुअली क्या होता है, डेवलप्ड कंट्री समटाइम वो कोई भी चीजों को डिस्कवर करके रिसर्च करके जो भी उससे प्रोडक्ट जनरेट वो अपने पास पेटेंट करके रख लेते हैं, दे आर नॉट गिविंग टू एवरीवन, सो दैट इज not ethical. It is for that should be everyone, especially the healthcare, which is the for the human welfare. Second one is a biopiracy. Biopiracy, this is also very important because it's preventing exploitation of indigenous knowledge or resources. Indigenous knowledge means हमारे यहाँ पहले जो भी जिस पर्टिकुलर एरिया में कुछ मेडिसिनल प्लांट हो रहा हो या उसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हो, इंडिजीनियस चीजें मतलब घरेलू चीजें, वो उस चीज को, उस रिसोर्स को दूसरे लोग आके उसको एक्सप्लॉइट करें, वो उनसे लेकर जीरो रेट में लेकर या वहां पे सेल आउट करके ग्रो करके वो बाहर बेचे, उसको ऊंचे दाम पे या उसको ले जाएं, this will come under this biopiracy. Okay, so ये बायोपायरेसी को रोकने के लिए भी जैसे हमने बहुत जगह ट्राइबल बेल्ट है उसमें हमने ये कर रखा है कि उसकी लैंड कोई नहीं परचेस कर सकता, वहां की क्रॉप में कहीं ग्रो नहीं कर सकता बाहर वाला, to save this kind of thing. Licensing the transparency, advocating fair agreements in the commercialization of innovations. तो इसमें एग्रीमेंट होता है कि इनोवेशन का कि हम इसको कमर्शलाइज करेंगे, कितने समय तक कमर्शलाइज करेंगे, व्हाट विल द रेट, व्हाट विल द अदर टर्म्स एंड कंडीशन. सो दिस विल कम अंडर दिस एथिकल कंसिडरेशन. IPR is a central issue in any industry. This is the significance of IPR issue. It should make legislation clear on the criteria for the patentability of inventions, because इसके बेस में पहले कहीं कोई काम कर रहा है, वो दूसरा प्रोडक्ट उसको एक्सप्लॉइट करके दूसरी जगह सेल आउट कर रहा है, डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री से, अंडर डेवलप्ड कंट्री से उसके प्रॉपर इंडिजीनियस नॉलेज को, इंडिविजुअल प्रोडक्ट को ले जाके दूसरी जगह हाई रेट पे सेल कर रहे हैं, उससे अपने प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं. तो दिस इज नाउ
the scenario has been changed. Okay, through the government we have to do also. Government has been changed. Government has taken lots of things. Now this is the India is already member, so उसके लिए for the signing of the voice is not WTO, Paris Convention, PCT, Bern Convention, Convention on Biological Diversity, जो this is the India is already member of, इसको treaty sign करनी पड़ती है because in the global way, globally treaty है ये, like Convention on Biological Diversity, ये this is an international treaty aimed at preserving biological diversity, ensuring sustainable use of its component and promoting fair sharing of benefits arising from genetic resources. मतलब कहीं पे अगर कोई चीजें हैं उसको फेयर तरीके से हम उसको शेयर करें, और जो जिस जगह की चीजें वहां के हम लोगों को ज्यादा हम उसको हम शेयरिंग दें, प्लस उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, दिस विल कम अंडर दिस टाइप ऑफ ट्रीटी. Now, what can be claimed? Especially this, what can be claimed under this, which especially in the field of the biology, we can claim other person they know about their field, because being a biologist, I can say only this thing, like some diagnostic test. आपने कोरोना के समय देखा था, lots of scripts also coming, lots of things also coming. They have patented that diagnostic kits. Research tools, some research tools are coming. Research tools है, gene therapy है, gene therapy को हम कर सकते हैं claim. Therapeutic proteins है, sensors है, bioinformatics sequence है, pharmaceuticals है, so which can be claimed. Okay, so lots of things under this category. Social scientists and then other things, other person also that they can be claim other things. Okay. Now the IPR issue ethical consideration. By using this IPR ethical consideration and academic writing, these are the few glimpses of our research lab. This is our research highlight. Basically, my lab is working on different area, basically biosensor, snake antivenom, then the bioinformatics, herbal products, etc. So in the last 2 years back, I have developed some sensor for the detection oral cancer through saliva. So this patent, I have filed this patent, which is published, which is the under the public domain. Hope so within the 6 to 8 months will they will grant this patent. These are the developed biosensor. You can use only the use of your saliva. You can detect the cancer, oral cancer. So these are the devices, my devices. You have to use some transducers. These are the how this microfluidic channel. So through the saliva, you give here you collect the saliva, then electrolyte, and it will flow and will give the results. This is the formulation of this glycosamine pentaphyla for cutaneous and candidiasis. This is also under review. It's also art of search. This has gone be I have submitted for the art of search. Art of search means this product or process is patentable or not, because biosensor was a product, so it is patentable. So patent attorney, patent agent will tell you about. Even you can also search it's a patentable or not. So through the art of patent, I have got
Hello, sir. Voice is not coming. अच्छा, सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी सर। हेलो सर कनेक्ट हो गए हैं आप तो हाँ, जी सर। if you have any queries you can ask me कनेक्ट any। हो गए हैं आप, है ना? हाँ जी जी। हेलो सर। हाँ यस। गुड आफ्टरनून सर। हाँ ओके। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ यस। जी सर आवाज आ रही है। ओके। हाँ आ रही है आपकी, बोलिए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आपको कुछ क्वेरीज पूछ सकते हैं। नहीं सर कोई ओके प्रॉब्लम ओके। नहीं। एनी अदर, किसी को अगर क्वेश्चन पूछना हो। हेलो। नो सर थैंक यू। ओके ओके ओके। हेलो। हाँ यस। यस सर। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत में जो एथिकल इश्यूज होते हैं एकेडमिक्स को लेके, एकेडमिक्स के क्षेत्र में, तो उसको डील करने के लिए कोई नेशनल लेवल पे कोई कमेटी है जो इसको डील करती हो, ये जानना चाहता हूँ। हाँ, पेटेंट और ये सबको देखने के लिए आपको पेटेंट जो लॉस फॉर्म हुए हैं, पेटेंट ऑफिसेज यस। हैं जो है, वहां पे आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके सर। हाँ स्पेशली सर मैं प्लेगरिज्म को लेके जानना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ बताइए। जैसे जैसे कि जो साहित्यिक चोरी होती है उसको लेके मैं जानना चाहता हाँ हूँ हाँ कि किस लेवल पे हम्म, कमेटीज काम करती हैं। हाँ हाँ। तो प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए उसको हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हम चेक कर सकते हैं कि ओके सर। वो कहाँ से लिया है। तो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे हम बता सकते हैं कि अगर किसी ने चोरी किया है 10 या 20% दैट कैन बी परमिसिबल, कि वो सिमिलरिटी होगी 10-20% दैट विल बी ओके। ओके अगर ओके सर। इसीलिए आजकल सर्टिफिकेट लगवाते हैं, प्लेगरिज्म रिपोर्ट लगवाते हैं ओके इवन सर। डिसर्टेशन में, पीएचडी थीसिस में, ओके सर। टू अवॉइड दिस थिंग। ओके ओके। थैंक यू। एनी अदर थैंक यू क्वेश्चंस? सर। थैंक यू। ओके ओके। सो डॉक्टर Ahirwar, okay. Any other question, any queries from your side and any other?
सबसे पहले ये बताइए समझ में आया कि नहीं, बिकॉज हाँ, एक्सप्रेशन सर आपके देख नहीं पा रहा था, मैं आपको नहीं देख पा रहा था, आप मुझको नहीं देख पा रहे थे। आई जस्ट वांट टू नो कि आपको मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है वो समझ में आया कि नहीं। ओके, थैंक यू, बिकॉज दिस इज नॉट माय फील्ड, आई एम प्योरली। हाँ जी, सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ ओके, हाँ पूछिए, हाँ पूछिए, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे जैसे थे। हम डेटा कलेक्ट करने फील्ड पे जाते हैं, हाँ हाँ, तो जैसे हम डेटा कलेक्ट करने फील्ड पर जाते हैं तो हम किसी से परमिशन लेनी होती है या हम रैंडम जाके कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, रैंडम कलेक्ट नहीं कर सकते कभी। सबसे पहले तो आपको जैसे डेटा कुछ कलेक्ट करना हो तो सबसे पहले तो क्वेश्चनेयर वगैरह या जो भी आपको कंसेंट वहां पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको महिला एवं बाल विकास विभाग से कुछ कलेक्ट करना हो तो उस एरिया से आप वहां पे जो भी ऑफिसेस है वहां पे आप कांटेक्ट करोगे, दे विल परमिट यू। और समटाइम इट्स नॉट पॉसिबल, तो कंसेंट में तो एटलीस्ट आपको साइन कराने होंगे उसके, जहां से आप इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी, कि आप देना चाहते हो कि नहीं। और उसके पहले आप उस डिपार्टमेंट से भी एक एनओसी लेनी होगी, है ना। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। Sir, one more question is there. हाँ ओके, सॉरी, Hello. Sir, one more हाँ question is there. Sir, I want to know that what is, hello. प्लीज वन बाय वन करके बोलेंगे समझ में आएगा। Sir, what is the difference between patent and copyright? पेटेंट में प्रोसेस या प्रोडक्ट को आप पेटेंट कराते हो, जैसे आपने कुछ नया प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट या प्रोसेस पेटेंट कराते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप किया, कुछ नई प्रोसेस डेवलप की। कॉपीराइट में आप आर्टिस्टिक चीज को आप कॉपीराइट करा, जैसे आप फॉर बुक है या कुछ म्यूजिक है, नया म्यूजिक है, कई रिसर्च पेपर इज आल्सो, तो कॉपीराइट में साइन लेते हैं, तो विच कम अंडर दिस कॉपीराइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कैन आई लीव? ओके, थैंक यू वेरी मच।
15-20 मिनट लग जाए। Yeah.